In this video, we will study mainly about evolution of seed habit. But to study evolution of seed habit, we will also study what is seed habit, what are the distinguishing features between Gymnosperm and Angiosperm, what is Heterosphoria, what is evolution of the seed habit. So what is basically seed? Seed is formed by ripening of the ovule. So we can define seed. Ovule which gets ripened is called as seed. A ripened ovule is called as seed. Now we can see here, these are the seeds of angiospermic plants. This is castor seeds, these are मूंग seeds. जितनी भी pulses हैं उनमें ये seeds हैं. तो ये यहाँ पे हम मूंग seed ले रहे हैं. And this is about pine nuts, which are of pinus, which is a gymnospermic plant. So how this ovule ripens to form seed, this we'll discuss. So this is basically an angiospermic plant. If we see angiospermic plant, they are flowering plant. And this is its female structure called as gynosia. This part is ovary, this is style, and this is stigma. Inside the ovary are present ovules. Now if we cut transverse section of the ovary, we will see that this is the cushion-like tissue present in the center called as placenta, on which ovules they are born. So these are young ovules. So this is the permanent slide showing ovule present on the placenta. So this is again transverse section of the ovary. This is also a section of the ovary showing ovule. This is marginal presentation. And this ovule basically, this has in the center a mass of parenchyma. This is called as nucellus. Inside nucellus, this part is called as embryo sac. Embryo sac has egg, then synergids, antipodal cell. These are two polar nuclei. And this nucellus, very important, this is covered by integuments. This is inner integument and this is the outer integument. On one side, this part is open, so this is not covered by integument. This is called as micropyle, and this opposite part is called as chalaza, and this is the stalk of the ovule. So what happens during fertilization? Pollen grains will fall over here, and pollen grains, they will germinate to form the pollen tube like this. So these pollen tube will pierce the nucellus part, and this is carrying the male gametes inside. And out of these two male gametes, one will fuse with the egg cell. Egg plus sperm, or we can say male gamete, they fuse to form a diploid structure called as zygote. So zygote will be produced over here at this part. Zygote will be produced. This zygote will develop into embryo. This will develop into embryo. And when this develops into embryo, these integuments, they lose water, they get hardened up, and this ovule will get converted to seed. So this will lose water, this will get ripened to form the seed. In the seed will be present embryo, and this pollen tube which is carrying the male gamete toward the female gamete, this reaching of the pollen tube carrying the male gametes toward the female gamete, this process is also called as siphonogamy. This is found in angiosperms. This character is not found in the gymnospermic plant. So here we can see another feature also. We can see ovules, they are found inside this is ovule, and they are present inside the ovary. So ovules, they are protected by ovary wall. Ovary ripens to form fruit and ovule ripens to form seed. If we eat mango, we can see that inside seed is there, then pulpy part is called as its fruit. Similarly, oranges, inside seeds are present and outermost part is juicy, right? It is protected by the ovary wall. So seeds are protected inside the angiosperm, ovule, or we can say seeds are protected by the ovary wall. So this is about ripened ovule which form the seed. So ovule is covered by coverings called as integument. So we can say this is an integumented megasporangium in which meiosis occurs.
It develops seed after fertilization, like we have discussed how seed is produced. And then we have discussed the structure. Nucellus is there covered by integuments, and this is born on the placenta. So seed ripens to form, ovule ripens to form seed. Now plants which have seeds, they are also called as phanerogams. And phanerogams, they are included under spermatophyta. Spermatophyta are also called as seed-bearing plants. There are further of two types, gymnosperms and angiosperm. Difference between gymnosperm and angiosperm is, gymnosperms, seeds they produce, but they are naked. They are not present inside the ovary. Like this, they are not present. In gymnosperm, cones are present, male cone, female cone, and in the female cone seeds are produced. They are not covered by ovary wall. But in case of angiosperm, like we have seen in the previous slide, seeds they are present inside the ovary and they are protected by the fruit. Then if we see gymnospermic plants, they are present without ovary wall. But these are angiospermic plants, they are protected by the ovary. Plants with unprotected seeds, they are found in gymnosperms, and plants with protected seeds, they are found in angiosperms. So we can say angiospermic plants, they are more advanced as compared to gymnospermic plant. We can see here this is the mango, unripe mango, and this part we can see here, white part. This is its seed part, and this part is the ovary which ripens to form the fruit. Similarly, this is lemon. We can see these are the seeds present inside the this is present on the placenta, and these are the seeds, and this is the ovary which is protecting the seeds inside. So this is found in case of angiosperm. So angiosperms, they are highly advanced, but here we can see this is the megasporophyll of the gymnospermic plant, which is present in the cone, female cone, and this is the seed having wings. Especially this is found in Pinus, which is a gymnospermic plant. So here we can see seeds, they are lying naked on the ovuliferous scale, and from here they can blown off with the help of wind. They are not protected inside the ovary wall. So gymnospermic plants, they are less advanced as compared to angiospermic plants. So this is the difference between gymnosperms and angiosperm. Now we will see certain gymnospermic plant. So we can see this is the cycas plant, and they are very slow growing plant. This is Araucaria, they don't grow fast. This is Araucaria. This is Zamia. We can see here cone also. This is the cone of the Zamia plant. So these are the gymnosperm. This is the Pinus plant. So these are the gymnospermic plant, and these are angiospermic plant, which is the most predominant vegetation on the earth. This is eucalyptus, highly tallest tree. These are the different kind of flowering plants of angiosperms. This is bombax, which is pollinated with the help of birds. We can see here this is the flower of bombax. Then we can again see here this is asparagus, zinnia. These are flowering plants. This is again a flowering plant. So these are angiospermic plants, and these are gymnospermic plant. Gymnospermic plants, if we see the differences between them, gymnospermic plant, they grow very slowly. Their growth is slow. But angiospermic plant, they show normal and fast growth. Gymnospermic plants, they are less adapted to the environmental conditions, and angiospermic plants, they are most predominant vegetation on the earth. So अभी जो एरा चल रहा है, इसमें आपको ज़्यादा एंजियोस्पर्म मिलेंगी, क्योंकि वो वाइड वेराइटी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वहाँ पे अडेप्टेड होते हैं. जिम्नोस्पर्मिंग जैसे वो फैलते हैं या डिस्पर्स होते हैं, उनके लिए उतने ज़्यादा मेथड्स नहीं हैं. दे हैव लिमिटेड मीन्स ऑफ डिस्पर्सल. But angiospermic plants, they have various kinds of dispersal methods. So they are dispersed all over the earth. That's why they are predominant vegetation on the earth. और अगर हम vascular tissue देखें दोनों का, what is vascular tissue? It is mainly made up of xylem and phloem, which helps in conduction of water, mineral and nutrients. Now xylem of gymnospermic plant is made up of more of the tracheids. I mean 95% will be tracheids and 5% vessels. Now in case of angiosperm, this will be reverse. 95% will be vessels and 5% will be tracheids. Vessels, they show efficient mode of conduction of water and minerals.
Now, gymnospermic plant, they have unprotected ovules and seeds. Seeds are not found inside the ovary, but here in case of angiospermic plant, seeds they are protected and they are found inside the ovary. So they are protected ovule which ripen to form the seeds. Now, gymnospermic plant, they originated in the Paleozoic era about 265 million years ago, and angiospermic plant, they originated in the Mesozoic era about 141 million years ago. Now, gymnospermic plant, they dominated in the Mesozoic era, 195 million year. They were most predominant in this era. So इस इरा में उनको डोमिनेंट वेजिटेशन बोला जाता था क्योंकि बहुत ज़्यादा जिम्नोस्पर्म्स थे, तो दिस वाज कॉल्ड एज एज ऑफ जिम्नोस्पर्म. तो अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की, तो उनकी ज़्यादा जो डोमिनेशन थी वो सीनोजोइक इरा में शुरू हुई, आज तक चल रही है. So now we can say this is the age of angiosperm because angiosperm they are found in wide variety or wide conditions on the earth. जिम्नोस्पर्म की स्पीशीज़ हैं अबाउट 725 और इससे थोड़ी ज़्यादा होंगी, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं एंजियोस्पर्म की. Now if we see the occurrence of the gymnospermic plant, they may be in the form of trees. They are mostly woody plants, but angiosperm they may be found in the form of herbs, herbaceous. Woody plant can be in the form of shrubs and trees. Trees can be medium size, they can be large size. तो जो जिम्नोस्पर्म के ट्रीज हैं उनकी हाइट काफ़ी होती है. तो मेजर डिफरेंस अगर हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखें, एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स होते हैं, तो एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं. जो जिम्नोस्पर्म है उनमें कोन्स होते हैं, मेल कोन एंड फीमेल कोन, और उनमें सीड्स जो है नेकेड है एंड दे आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द ओवरी वॉल. फ्रूट बनते हैं एंजियोस्पर्म में, जैसे हम मैंगो खाते हैं या ऑरेंजेस खाते हैं या लेमन, पीच. तो फ्रूट फॉर्मेशन अकर्स इन द एंजियोस्पर्म एंड gymnosperm जो हैं they will have ovule which ripen to form the seeds. They are not protected inside the ovary wall. So how does this lead to the formation of seed habit? तो सबसे पहला जो important part है that is heterosphoria. So topic is heterosphoria and seed habit. Now if we see ferns जो थे pteridophyta को belong करते हैं, so they are also called as pteridophytes. तो ये मैंने टेरेस बनाया है, टेरेस का डायग्राम आप देख सकते हैं. ये इसका है अंडरग्राउंड पार्ट राइजोम, और ये है इसके कंपाउंड लीव्स विथ लीफलेट्स. ये है छोटा सा लीफ जो ऐसे यंग है और कॉइल्ड है. दिस इज़ कॉल्ड एज यंग सर्सिनेटली कॉइल्ड लीफ. अब जब ये मैच्योर हो जाएगा, इसका लीफलेट जो है दिस विल बेयर हियर एट दिस पोजीशन एक ग्रुप ऑफ स्प्रेंजिया होगा. देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ स्प्रेंजिया होगा. दिस इज़ कॉल्ड एज सोरस. इसको हम सोरस बोलते हैं. और ये जो अगर हम इसका सेक्शन कट करें तो जो सोरस है उसको हम फर्टाइल पिन्ना भी बोलते हैं. अगर यहाँ से हम इसका सेक्शन कट करें तो हम देखेंगे ये जो टिश्यू है लीफ का, यहाँ पर बहुत सारे स्प्रेंजिया बॉर्न हैं. राइट, वी कैन सी हियर दीज आर स्प्रेंजिया. अब स्प्रेंजिया के अंदर ये जो पार्ट होता है दिस इज़ कॉल्ड एज स्पोरोजिनस टिश्यू. अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉयड है, ये फिर स्पोर मदर सेल बनेंगे और स्पोर मदर सेल में म्योसिस होता है तो हमारे पास हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं. तो ये हैं हैप्लॉइड स्पोर्स. तो ये जो फर्न्स हैं, ड्राई टेरिस हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गए, तो उनमें एक ही तरह के स्पोर बन रहे हैं. जब एक ही तरह के स्पोर बनते हैं सो प्रोडक्शन ऑफ वन काइंड ऑफ स्पोर इज कॉल्ड एज होमोस्पोरी. होमो मीन सेम, स्पोर मीन स्पोरी. So spores they are produced of one type in case of pteris or in case of Drypteris or in ferns. But in one of the pteridophytes or few other pteridophyte also there was origin of the heterosphoria. How does this occur? In Selaginella, Marsilia and Azolla. Production of two types of spores which give rise to two types of gametophytes is called as heterosphoria. So in case of Selaginella, there will be two types of spores, small in size. So these are the spores which are small in size called as microspores. And this will germinate to form male gametophyte. तो ये हम देख सकते हैं कि this is the entherozoid. ये elongated nucleus है और ये एक pair of flagella है जो इसकी movement में help करेगा. So this is called as male gametophyte. Now this is megaspore, and this megaspore is bigger in size. We can see this is bigger in size. This is megaspore. This is unthickened area present on the megaspore. This is outermost wall called as exine. So megaspore will germinate to form the female gametophyte.
Microspore will germinate to form male gametophyte. This is the male gametophyte, and megaspore will germinate to form the female gametophyte. So here we can see this is the female gametophytic part. This is the female structure called as archegonia. जो आर्किगोनिया के अंदर यहाँ पे एग होगा, उसकी फर्टिलाइजेशन के बाद ये बन जाएगा जाइगोट. तो हम देख सकते हैं कि जाइगोट इज ऑल्सो रिटेन्ड इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट. तो ये बाहर नहीं आ रहा है, वहीं पे पड़ा हुआ है. सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. सो दो तरह के स्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर. दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोस्पोरी. फिर बहुत सारी स्टडी हुई कि सेलाजिनेला में जो स्टार्ट हुआ है हेट्रोस्पोरी का, टेरिडोफाइटा में मोस्टली होमोस्पोरी है, लेकिन हेट्रोस्पोरी भी मिल रही है. हेट्रोस्पोरी कुछ जेनरा में मिल रही है. तो इसके हेट्रोस्पोरी को फिर इसके फर्दर एविडेंसेस को स्टडी किया गया. तो बहुत सारे जो एविडेंसेस आए थे वो आए थे पेलियोबोटैनिकल एविडेंस ऑफ हेट्रोस्पोरी. पेलियोबोटैनिकल मीन फॉसिल स्टडी. फॉसिल होता है कि बहुत साल पहले जो हमारे प्लांट्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए या उनकी डेथ हो गई, तो उनके दबने की वजह से या उनका सब हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर भार पड़ने की वजह से या दबने की वजह से फॉसिल्स बन गए अबाउट मिलियन ईयर अगो. तो उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, उनकी जो स्टडी है पेलियोबोटैनिकल स्टडीज़, दे ऑल्सो इंडिकेटेड दैट हेट्रोस्पोरी वॉज फाउंड इन द फर्न्स. जो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच में एरा होता है, वहाँ पर हमें सीड फर्न मिले. सो हेट्रोस्पोरी वॉज फाउंड इन सम फॉसिल प्लांट, fossils of late Devonian and early Carboniferous period, like in Lepidocarpon, and then Lepidostrobus, Mesocarpon, Calmustacus and Casciana. तो ये प्लांट थे जिनमें हमें फॉसिल स्टडीज़ की वजह से पता चला कि इनमें दो तरह के स्पोर हैं. तो देखा गया कि जो मेगास्प्रेंजियम उनमें बड़े स्पोर्स हैं, उनमें कुछ स्पोर्स जो है उनका अबॉर्शन या डीजनरेशन भी हो गया था. तो इस स्टडी से भी हमें पता चला कि हेट्रोस्पोरी फर्न्स में मिलती है. अनदर एविडेंस इज फ्रॉम द डेवलपमेंटल स्टडीज़. व्हेन डेवलपमेंट वाज बीइंग स्टडीड, इट वाज फाउंड दैट इन सिलाजिनेला हेट्रोस्पोरी इज देयर. सो इन केस ऑफ सिलाजिनेला, दिस इज माइक्रोस्पोरोफिल and this is megasporophil. Microsporophil will bear microsporangium and megasporophil will bear megasporangium. And these are megaspores found in the megasporangium. So this is the, we can see here, this is the microsporangium. This is the wall of the microsporangium, and these are again spore mother cell which develop into microspores after meiotic cell division. So they are haploid. So they are small in size. So this is the microspore which is developing inside the microsporangium, and this is born on the leaf called as microsporophil. And this is the megasporangium. This is the wall of the megasporangium. तो यहाँ पे 3 हमें नज़र आ रहे हैं मेगास्पोर्स. एक इसका दूसरी तरफ होगा, तो ऑलमोस्ट 4 मेगास्पोर्स होते हैं. तो ये जो लीफ है, दिस इज़ बेयरिंग द मेगास्पोरेंजियम, दिस इज़ कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल. और ये जो स्पोर्स हैं इसके, दीज आर कॉल्ड एज मेगास्पोर्स. तो ये परमानेंट स्लाइड है इसकी सिलाजिनेला की, जिसमें स्ट्रोबाइलस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया गया है. तो आप देख सकते हैं, दिस पार्ट इज़ द मेगास्पोरोफिल एंड दिस पार्ट इज़ द माइक्रोस्पोरोफिल बेयरिंग द माइक्रोस्पोरेंजियम. So microspore will germinate to form male gametophyte and megaspores will germinate to form the female gametophyte. Then there are certain evidences from the experimental studies also. Developmental हो गया, paleobotanical हो गया, evidences from the experimental study. So we have discussed heterospory in Silaginella. I mean, 2 kinds of spores are being produced, microspores and megaspore. Now some scientists believe this is due to nutritional status. कि उनमें जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है कम हुई, तो साइज़ जो है ग्रो नहीं हुआ, and spores they develop into microspores. Because of the less photosynthetic activity, nutrient availability was less, and spores they did not get proper nourishment and they did not grow into the megaspores, and they remained small as microspores. So what is the importance of heterospory? Now we can see that gametophytes, mean spores which are being developing into gametophytes, they become dependent on the sporophyte for nourishment. अभी भी वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही बॉर्न है, उन्हीं से अपना खाना पीना ले रहे हैं, उन्हीं से अपना नरिशमेंट ले रहे हैं. तो 4 मेगास्पोर में से 3 जो हैं वो डिजनरेट हो जाएंगे एंड ओनली 1 मेगास्पोर इज लेफ्ट. लाइक वी सॉ हियर, दीज आर 3 एंड 1 इज प्रेजेंट ऑन द अदर साइड. चारों में से आउट ऑफ द 4, 3 will degenerate and 1 will survive, and this will become functional. So this is very important step. So 1 which remain functional, now that megaspore will be retained inside the megasporangium.
तो इधर ही रहेगा, वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहेगा. सो रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम. सो पहला स्टेप हेटेरोस्पोरी मीन प्रोडक्शन ऑफ 2 काइंड्स ऑफ स्पोर. सेकेंड हम डिस्कस कर रहे हैं रिटेंशन ऑफ द मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम. बाहर शेड नहीं होगा, उसके अंदर ही रहेगा. अब जो मेगास्पोरेंजियम है, now this will get transformed into ovule. So ovule will ripen to form the seed. So this has led to the formation of the seed. In truly, Selaginella does not bear the seed, but this is one step toward the seed formation. So we can define a seed is a modified sporangium with a single functional megaspore with integument. So we have discussed what is integument. Now this is the nucellus and these are its covering. These coverings are called as integuments, right? So Selaginella closely approached seed habit, represented an intermediate stage for the formation of the seed, but true seed habit is not found in the Selaginella. पर क्यों इसमें सीड नहीं बना, उसके भी रीज़न है कि इसके मेगास्पोरेंजियम के आसपास इंटेगुमेंट्स नहीं थे, प्रोटेक्टिव कोड्स नहीं थे. सो लैक ऑफ इंटेगुमेंट्स इन द मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोर इज़ नॉट कनेक्टेड विद द मेगास्पोरेंजियम. अगर हम यहाँ देखते हैं ये डायग्राम में, तो हम देखते हैं कि ये मेगास्पोर्स हैं, लेकिन उनका यहाँ पर ऐसे कोई फ्यूजन नहीं है, ऑर्गेनिक कनेक्शन नहीं है. तो ये ऐसे कैविटी में पड़े हुए हैं. दे आर नॉट फ्यूज्ड विद द मेगास्पोरेंजियम. दे आर नॉट ऑर्गेनिकली कनेक्टेड विद द मेगास्पोरेंजियम. दे आर नॉट कवर्ड बाय इंटेगुमेंट्स. दे आर नॉट ऑर्गेनिकली कनेक्टेड विद द मेगास्पोरेंजियम. Microspores, they are not received for germination, right? Like if we see in angiospermic plant, a pollen grain, they will fall on the stigma, they will germinate to form the pollen tube, and pollen tube will carry the male gamete. This is called as saphanogamy, and this is not found in the gymnospermic plant. Water requirement for fertilization ज़रूरी है इसमें. पानी के बिना इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, लेकिन एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं है. वहाँ पे वाटर, इंसेक्ट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, दे कैन हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन. इज रिटेन्ड नॉट शेड इन द फॉर्म ऑफ सीड. मेगास्पोरेंजियम रिटेन हो जाता है, लेकिन सीड की तरह वो बाहर डिस्पर्स नहीं होता है. और in angiosperm, what happens when embryo is produced, that becomes dormant, that undergoes a resting period, and that resting period or dormancy period is lacking in case of gymnosperm. So this has led to the evolution of seed habit in case of gymnosperms as well as in case of angiosperms. Now what is evolution of seed habit? Now we have seen that if we see ferns and gymnosperm, in between interlinking is seed fern plant, right, which arose about 280 to 350 million year ago. बहुत सारे फॉसिल रिकॉर्ड से कार्बोनिफेरस पीरियड में पता चला कि सीड फर्न प्लांट थे. नाउ हाउ डज दिस हैपन? वी कैन सी हियर, लाइक दिस इज़ द स्पोर, एंड ये इसके आसपास ऐसे कवरिंग्स हैं जो इसको कवर कर रही हैं. धीरे धीरे ये कवरिंग के साथ फ्यूज़ होता गया. सो अल्टीमेटली दिस हैज़ गेट कन्वर्टेड इनटू ओव्यूल. नाउ दिस इज़ द न्यूसेलस पार्ट and this has turned into integumented part like this. तो हम देख सकते हैं कि this is closely linked with the seed fern plant. This arose about 280 to 350 million year ago. Fossil records of Carboniferous period have given certain evidences. Many outgrowths, we can see these are outgrowths around the female spore from sporophyte. Female spores from seed plants were retained and protected inside the integumented megasporangium. Female spores developed into female gametophyte and they were protected by the coverings called as integuments. Like we discussed earlier, that female spore is protected by means of integuments. So what are the steps for the evolution? Number 1, introduction of the heterospore, mean production of 2 kinds of the spores like we discussed in Selaginella. Microspores and megaspore. Microspore germinate to form the male gametophyte and megaspore germinate to form the female gametophyte. Then we discussed formation of integuments around the sporangium with female spores. अभी हमने देखा कि कैसे वो जो outgrowth थी वो ultimately integuments में cover हो गई. Another step is retention of the female spore inside the sporangium and further development of the female gametophyte without liberation. वो बाहर नहीं आएगा, फीमेल जो स्पोर है अंदर ही रहेगा मेगा गैमेटोफाइट के अंदर. अनदर स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट इज साइफोनोगैमी. यू नो व्हाट इज साइफोनोगैमी? पॉलन ट्यूब जो कैरी कर रही है मेल गैमीट को,
और वो फीमेल गैमीट तक पहुंच रही है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइफोनोगैमी। सो अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन होगा, तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। अब जो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हुआ है, जो यंग सीड है, वो जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए अपने अंदर फूड भी स्टोर करके रखता है। सो यंग सीड स्टोर्स फूड फॉर द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। अब जो यंग सीड है दैट इज बीइंग प्रोटेक्टेड इनसाइड द ओवरी वॉल, राइट। सो फीमेल गैमीटोफाइट को भी वो प्रोटेक्ट करता है। तो जितनी एनवायरमेंटल कंडीशन होंगी, लाइक इफ़ इट इज़ हाई टेम्परेचर इज़ देयर, पानी की डेफिशिएंसी है या कोई और केमिकल इफेक्ट है, तो उसको जो बाहर वाली कोटिंग है, इंटेगमेंट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करेंगी। अब जब सीड जर्मिनेशन होगा, मीन व्हेन सीड इज़ बीइंग जर्मिनेटेड, तो वो जो एम्ब्रियो पड़ा है सीड के अंदर, जो बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज पे है, डॉर्मेंसी स्टेज पे है, तो उसको भोजन चाहिए या उसको फूड चाहिए, तो उसको जो स्टोर्ड फूड है फीमेल गैमेटोफाइट में, दैट विल बी मोबिलाइज्ड टू द एम्ब्रियो एंड सीड विल जर्मिनेट टू फॉर्म द यंग सीडलिंग. So seeds, they undergo period of dormancy during severe environmental condition or adverse environmental condition. Seeds are also protected inside the fruit. So young ovule, they ripen to form seed, and ovaries, they ripen to form the fruits. So seeds, they are more protected inside the fruit. So we can say angiosperms, they are better adapted on the earth. डबल प्रोटेक्शन मिल रहा है. सीड के अंदर एम्ब्रियो भी प्रोटेक्टेड है और सीड भी प्रोटेक्टेड है इनसाइड द ओवरी वॉल और इनसाइड द फ्रूट. तो उनके डिस्पर्सल के मेथड्स भी बहुत हैं. सो दे आर वाइडली डिस्पर्स्ड ऑन द अर्थ, दे आर वाइडली प्रोटेक्टेड ऑन द अर्थ. So angiosperm, this is the reason angiosperm, they are most predominant vegetation on the earth, because they are dispersed by various methods. They can pass the adverse environmental condition. Seed is protected, embryo become dormant, it is not being shed, and this is also protected by the ovary wall. So this is how angiosperm became seed plant, and this has led to the evolution of the seed habit in the angiosperm. So if you have any questions, please ask me in the comment box. And if you enjoyed my video, thank you for watching the video. And please like, share and subscribe. Thank you.